हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदन्या इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो ये हमारा आई थिंक सिर्फ मेंबर्स वाला जो है वो थर्ड लाइव सेशन है। तो यहाँ पे हमारे जो चैनल मेंबर्स है एंड जस्ट अ सेकंड, आई विल जस्ट मिनिमाइज माय वॉल्यूम। या सो दिस इज आवर थर्ड लाइव सेशन फॉर आवर चैनल मेंबर्स एंड स्टॉक सब्सक्राइबर्स। तो यहाँ पे जैसे कि एक्सपेक्टेड था, फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। मुझे ऐसे लग रहा है कि आई थिंक आई विल हैव टू डू 2 more लाइव सेशंस नाउ ओनली फॉर दीज एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस का मैं अभी आंसर कर पाऊँ यहाँ पे। सो लेट अस सी कि कितने क्वेश्चंस हम आज ले पाएंगे। आई विल ट्राई। लास्ट टाइम हमने डिसाइड किया था वैसे आधे घंटे का लाइव सेशन करने का, बट वो चला अराउंड 75 मिनट्स तक चला था। सो आज भी देखते हैं कि कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हम आंसर कर पाएंगे आप लोगों के लिए। सो पहले जो हमारे स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर्स है, मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर्स है, एमएफ यदन्या के सब्सक्राइबर्स है, उनके कुछ क्वेश्चंस हमारे जो चैट बॉक्स पे है वहाँ पे आए थे, तो वो आंसर करूँगा। एंड साथ में ये जो अपना चैनल मेंबर्स जो अभी एक नया फीचर भी लॉन्च किया हमने, जहाँ पे 59 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन रहेगा, वो स्पेसिफिकली ये जो लाइव सेशंस हम लेने वाले हैं उनके लिए रहेगा। तो वहाँ पे आप वो मेंबरशिप लेके भी you can ask a lot of questions to us, so we will be more than happy to answer all those questions. I will try कि आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे लाइव सेशंस होने चाहिए, बिकॉज द एफर्ट्स आर लेस कंपेयर टू अगर कोई वीडियो बनाना है। मतलब यहाँ पे इट्स लाइक अ डिस्कशन बिटवीन यू एंड मी। आप जब क्वेश्चंस पूछते हो तो आई विल ट्राई एंड आंसर योर क्वेश्चंस। सो लेट अस सी कि ये कैसे एक्सपीरियंस रहता है हमारा ओवरऑल with the new membership plan. So we'll start with the questions first. So Mr. Nikhil K ने question पूछा है, what is your opinion on multi-bagger stock? Any stock in growth or SIP or moderate जो model portfolios हमारे so considered because it can become multi-bagger. Yes, Mr. Nikhil. So I will not be surprised that कि few of our stocks will be multi-baggers. और ये किसी ने भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ लेमैन इन्वेस्टर और एज अ फंड मैनेजर कि किसी का स्टॉक मल्टीबैगर हो रहा है। द प्रॉब्लम लाइज व्हेन यू एक्सपेक्ट ऑल योर स्टॉक्स टू बिकम मल्टीबैगर, या फिर आप ये सोच रहे हो कि मैं मल्टीबैगर ढूंढना है मुझे और पूरा का पूरा पैसा वहां पे इन्वेस्ट करना है, तो ये कभी होता नहीं है। अल्टीमेटली द सम स्टॉक्स विल गिव यू मोर देन 30-40% CAGR ऑल्सो, but rest of the stocks will take your returns down, and that's why I always say that return on net worth is more important compared to return on single investment, that is a stock investment or a fund investment. fund तो होते नहीं है वैसे multi-baggers, but stock multi-bagger वहां पे होते हैं। तो ये चीजें हमें समझनी होगी यहाँ पे कि हमें स्पेसिफिक स्टॉक्स पे ध्यान देना है या पूरे हमारे टोटल नेटवर्थ या पूरे पोर्टफोलियो पे हमें ध्यान देना है। सो वो चीज आप बिल्कुल आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर कुछ होंगे तो डेफिनेटली आपके स्टॉक पोर्टफोलियो से भी हो सकते हैं, एंड फ्रॉम योर मॉडल पोर्टफोलियोज भी वहां पे मल्टीबैगर हो सकते हैं, बट सारे के सारे मल्टीबैगर नहीं होंगे। एंड दैट्स व्हाई यू विल ऑलवेज गेट सम रैशनल रिटर्न्स। तो वहां पे ऑब्जेक्टिव शुड बी कि 12 से 15% तक का लॉन्ग टर्म का रिटर्न अगर मैं ला पाऊं तो आई थिंक दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट टू अचीव ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स। तो ये मैं इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा देना चाहूंगा। Now the next question, Mr. Mukesh Pal is asking, what is the difference between focused portfolio and concentrated portfolio? तो नहीं, मुझे कोई लगता नहीं कि इसमें कोई ऐसा कोई डिफरेंस है, और अगर किसी ने बोला भी होगा तो आई डोंट नो, मतलब मुझे तो बिल्कुल उसका लॉजिक नहीं समझ में आता। फोकस्ड अप्रोच इज अ कंसंट्रेटेड अप्रोच ओनली। वहां पे नॉर्मली द अपोजिट वर्ड्स आर कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो वर्सेस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फोकस्ड पोर्टफोलियो एंड कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। So Mr. Krishna Sahu is asking, I have a question regarding traded volume of any stock on a given day. We read that stock X buy volume was 2 lakhs and sell volume 3 lakhs. To my understanding, buy volume and sell volume should be same. कोई बेचेगा तभी तो कोई खरीदेगा। Please clarify why buy and sell volumes are different and not same. I don't think buy and sell volumes different होते हैं। Problem is that
कि जब वो हमें वो स्क्रीन में नजर आता है कि यहाँ पे बाइंग क्वांटिटी एंड सेलिंग क्वांटिटी, दैट इज द डिमांड एंड सप्लाई अवेलेबल ओवर देयर. सो अल्टीमेटली अगर कोई ट्रेड होता है तो ऑब्वियसली विदाउट बाइंग एंड सेलिंग वो ट्रेड कैसे हो सकता है. सो विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल. समटाइम्स क्या हो जाता है कि जब सेलिंग होती है, शॉर्ट सेल करता है कोई आदमी और उस पर्टिकुलर स्टॉक को सर्किट लग जाता है, वहां पे भी बाइंग एंड सेलिंग होती है. बट अल्टीमेटली अगर एट द एंड ऑफ द डे वहां पे उसके डिमैट अकाउंट में वो शेयर्स नहीं थे बट उसने शॉर्ट सेल किए, तो ऑक्शनिंग जब होती है, वो ब्रोकर जब ऑक्शन करता है तो वहां पे ऑब्वियसली दूसरा वॉल्यूम अवेलेबल हो जाता है टू बाय विद एक्स्ट्रा कॉस्ट. तो ये एक होता है. बट अल्टीमेटली वहां पे भी बाइंग और सेलिंग में वॉल्यूम्स तो सेम होने ही चाहिए, अदरवाइज ट्रेड कैसे हो सकता है. तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको शायद वो कंफ्यूजन हो गया होगा कि बाइंग क्वांटिटी एंड सेलिंग क्वांटिटी, दैट इज दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स. तो शायद वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है. दैट्स व्हाट आई फील. Next question, Mr. Ketul Shah is asking, I think first he want to congratulate us, congrats for growing success of your startup. You are one of few advisors on YouTube who have sound fundamental team. So we trust the downside in your stock selection will be limited and average them safely. I have mostly seen that the stocks suggested by you are generally a bit late, or a good 20-30% rally is already done. For example, Airtel to value portfolio. I understand in the long run it may not make a big difference, but can you share a list of potential incomers in advance? I guess you will be tracking them much earlier and later suggesting us. Just asking you folks to be a bit aggressive given the fundamental knowledge and analysis your team does. It will not be too risky. So I think Mr. Ketul, if you are part of our Stockometer Plus subscriber and all those things, so वहाँ पे you will get to know that कि what kind of stocks we are tracking. So वहाँ majorly what stocks we track, that those are the stocks we try and include in our model portfolios. ऐसा नहीं होगा कि मतलब वहाँ पे कोई नया stock है या हमने उसको एनालाइज नहीं किया है, बट ऑब्वियसली वी वुड लाइक टू डू आवर ड्यू डिलीजेंस, और जब हमें वो कंफर्ट आता है देन एंड देन ओनली वी इंक्लूड दैट पर्टिकुलर स्टॉक इनटू आवर मॉडल पोर्टफोलियो. तो ये हमेशा हम वैसा करने की कोशिश करते हैं, बट वी विल ट्राई दैट कि आई थिंक द टीम इज ऑल्सो वी आर इंक्रीजिंग. तो वहाँ पे भी आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. विल ट्राई एंड बिट, आई विल नॉट से एग्रेसिव, बट वी कैन से इट्स लिटिल more fast in our research, so that we will definitely try and do that. Thanks for the very good feedback. Mr. Vivek is asking, why are DIS selling and FIS buying so much? Does this trend signify something? So I think easy liquidity का फंडा है. तो यहाँ पे जैसे ग्लोबल मार्केट में जो लिक्विडिटी अवेलेबल है, वैसी लिक्विडिटी इंडियन मार्केट्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास अवेलेबल नहीं है. और ऊपर से इवन रिटेल इन्वेस्टर भी थोड़ा सा डरा हुआ है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये जो रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स है उनके बारे में नहीं, बट ओवरऑल आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर को एक चीज तो लग रही है कि 7,500 तक मार्केट गया था, अभी ये मार्केट वापस 11,200-300 के लेवल तक जा चुका है. अभी थोड़ा सा करेक्शन हुआ है वहां पे अराउंड 11,000 तक, बट वहां जो एक पोटेंशियल या फिर लिक्विडिटी का फ्लो एफआईआईज के पास हो सकता है, वैसा फ्लोज हमारे पास नहीं है. एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस व्हेन एफआईआईज स्टार्ट बाइंग इन बल्क, तो डीआईएस जो होते हैं वो वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इन मार्च, जहां पे एफआईआईज वर सेलिंग, डीआईएस वर बाइंग इन द मार्केट. सो ऑब्वियसली वहां पे जो एक्विजिशंस हुए होंगे, कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहां से भी हो सकती है. दे माइट थिंक कि कुछ अगर रिडेम्पशन प्रेशर्स वगैरह आ जाए तो वी शुड बी रेडी एट दैट पर्टिकुलर टाइम टू हैंडल दैट सिचुएशन. तो ये चीज हो सकती है, बट ऐसा नहीं होता कि एफआई जो स्टॉक्स बेच रहे हैं वही स्टॉक्स जाके डीआईएस बाय कर रहे हैं. तो नॉर्मली ये बहुत ज्यादा रिलेट करने की कोशिश होती है. तो ऐसा एग्जैक्टली रिलेशनशिप मुझे लगता है कि इतना नहीं करना चाहिए. जरूरी नहीं है कि जब डीआईएस सेल कर रहे हैं तो वही स्टॉक्स एफआई जाके बाय कर रहे हैं. सो इट्स अ वेरी बिग मार्केट कंपेयर टू दैट. नेट वॉल्यूम्स जो है वो बहुत छोटे हैं. तो वहां पे हमने हमेशा याद रखना चाहिए कि उससे ऑब्वियसली इट कैन इंडिकेट समथिंग, बट उसी पे पूरा का पूरा एनालिसिस करना विल नॉट बी राइट. सो दैट इज द रीजन आई फील इट कुड बी फॉर दैट.
Mr. Ram Singh is asking, please put some lights on more underpenetrated sectors in India, like you already acknowledged insurance and AMC sector. So definitely, Mr. Ram Singh, we are also working on the same thing, and we will keep on sharing that particular research with our Stockometer subscribers and our model portfolio subscribers also. So stay tuned for that. Definitely, we are looking into that, but the underpenetrated sectors वगैरह जो है वहाँ पे थोड़ा सा लिस्टिंग मतलब ज़्यादा नहीं है वो सेक्टर्स में, एंड दैट इज़ अनदर रीज़न why there are few underpenetrated sectors available in India. But definitely we do watch the consumption patterns of the developed economies, and we try and relate to those consumption patterns with our Indian economies. तो कैसे वो relate करके वहाँ से क्या क्या find out कर सकते हैं, वो हम चीज़ें करते रहते हैं. So definitely once we get that, we will surely share with you people. I think there is one question on the chat box also. So Mr. Anand is asking, hi sir, I have Tata Consumer and Manappuram in my portfolio. I am planning to hold it for long term. What is your opinion on both the stocks, Mr. Anand? We are positive there should not be any problem. Consumer story, I think it's a long story, and Tata has consolidated all their brands, consumer brands, into one company. That is a very good thing. Even the new CEO, he's also heading the company very well. And I think in the coming years, or I'll say in coming quarters, they will start getting some good market share. So there should not be any problem. We have done a detailed analysis on Tata Consumer products. So if you have not subscribed to our Stockometer Plus feature on our website, so definitely you should go and subscribe that. There you will get two detailed videos on Tata Consumer. That those videos will surely help you in understanding the business very well. Now regarding Manappuram, so Manappuram, no problem. I think in NBFCs, this is one NBFC which is looking strong because of their majority business, which is into majority means around 60 to 70% के बीच में is into gold loans, and that's why the position compared to other NBFCs is looking very well. But personally, I feel Muthoot Finance is more attractive compared to Manappuram, because Manappuram Finance, the other diversified portfolios could be in little trouble, specifically microfinance and all those things, which is unsecured kind of lending. So वहाँ पे one should be cautious about that. So otherwise, Manappuram is a good company, but I'll prefer Muthoot Finance compared to that. But this is not a direct advice to you to go and invest. For that, you need to analyze your risk profile. You should ask your advisor and then take. Even our model portfolios also, we have analyzed all those things. We have given the methodologies in those model portfolios, and then only you should select which kind of model portfolio is good for you. These are all reference model portfolios which we try and develop and keep on researching on them to help build your long-term portfolios. That is the disclaimer we would like to tell you. I think Mr. Chandrasekhar is asking, what is the meaning of impairment of financial instruments in P&L statement? It is coming in the expenses column. Please give the solution. So impairment means it's like loss booking होता है. जैसे कि टाटा मोटर्स ने किया था चाइना में, जो इन्वेस्टमेंट्स किए थे उन्होंने JLR में, वहाँ पे अराउंड 3 बिलियन पाउंड का उन्होंने इम्पेयरमेंट लॉस लिया था. इन अ वे मतलब भूल जाओ, वो गया पैसा हमारा. So that's why they put it here, और उसकी वजह से फिर लॉस वहाँ पे बहुत बड़ा बुक करना पड़ता है. So impairment is like permanent loss. ले लिया भाई, वो एक यूनिट फेल हो गया and we are taking that particular loss. That's what impairment loss. Mr. Rajendra Singh is asking, will RBI extend moratorium? So banks do not want to extend it. Reason behind, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि क्या एग्जैक्ट एनपीएस आ सकते हैं इसके थ्रू, और एक बार ये मोरेटोरियम एंड हो जाएगा तो फिर आरबीआई भी क्लियरली कॉल ले पाएगा कि ये एनपीएस के रूल्स कुछ चेंज करने या नहीं करने. अगर दोस्तों ये ध्यान से सुनिएगा, ये स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैंकिंग सेक्टर, एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल बैंक्स इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑल्सो, इवन एनबीएफसीज ऑल्सो. अगर यहाँ पे मोरेटोरियम पीरियड एंड हो जाता है और फिर वहां ज्यादा रूल्स ट्वीक नहीं किए जाते हैं फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड. वी कैन सी डबल डिजिट NPA numbers, gross NPA numbers, and that will be disastrous for the banking and NBFC sector. So whenever you are investing into banking and financial services sector, you need to keep that in mind. This is an unprecedented situation.
which got developed because of a medical crisis which turned into a financial crisis. तो यहाँ पे nobody has seen कि क्या exactly होने वाला है. Everybody is clueless, including the bankers also. They do not know whether the NPAs will increase by 1% or 10%. So that is one thing we should be very clear about that. Even SBI के जो results आए थे वहाँ पे जिस तरीके के statements आए कि लास्ट 6 महीने में जिन्होंने 2 से ऊपर लोन के EMIs के रिपेमेंट किए हुए उनको हमने मोरेटोरियम में नहीं पकड़ा है. बट एनपीए का रिस्क वहां पे रहेगा ही रहेगा उनका. सो ये चीजें कैसे अनफोल्ड होती है ये देखना बहुत जरूरी है. आई पर्सनली फील दिस मोरेटोरियम पीरियड शुड एंड, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि इंटरेस्ट तो भरना नहीं है उनको, तो एटलीस्ट जो लोग कैपेसिटी है उनकी वो तो भरना स्टार्ट करेंगे. एक्चुअल एनपीए प्रेशर वी विल कम टू नो. तो ऐसा नहीं है कि मोरेटोरियम एंड कर दिया तो मतलब सबके घर पे जाके वो लोन के रिपेमेंट्स लेना शुरू कर देंगे. सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. बट ये चीज क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है. एनपीएस की क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे एनपीएस पता चलेंगे तो ये जो एनपीएस है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से प्रोविजनिंग करना उनको समझ में आ जाएगा. आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड. अ लॉट ऑफ पीएसयू बैंक्स, इवन फॉर सम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आल्सो, these NPA numbers could be little troublesome, and because of that next 1 year's profitability can go to zero level. So that one risk we are currently carrying, and we do not know what is the solution for that, because nobody has seen such kind of situation of moratorium earlier in their financial life. So that is the reason I think more clarity should come and this moratorium should end. I'm not saying कि सब जाके भरना ही पड़ेगा सबको, जिसकी situation नहीं होगा वो नहीं भरेगा, बट क्या हो रहा है वो पता चलने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी. सो लेट अस ऑल होप इट शुड हैपन. Mr. Vinay TM is asking, I think it's a very big question. How can one justify the valuations at which the likes of Asian Paints, HUL, Nestle, Pidilite trade at? I know they are world-class businesses run by high-quality managements, but the valuations do seem simply outrageous. For your information, we can refer to the US Nifty 50 bubble in early 1970s, where the likes of Xerox, Kodak, Coke were valued at 40 to 50 times earnings, and we all know that what happened next. Parimal sir, what do you think is different in our case with the Indian companies mentioned above? Also, it is clear that Pidilite, Nestle can't keep growing 20% plus because of the high base and saturation of each markets. So I think most of what he is trying to say is these are very good companies, world class businesses, but the price to earnings ratios of these companies are very high, 70, 80 and some cases even 90 and 100 also. So is it justified that the valuations they are carrying? So definitely it is not justified. No doubt it is not justified, and there is a lot of euphoria which is going on. And there is a TINA factor, that is there is no alternative factor. What is the alternative for investments when you are getting so much of passive flows in the markets? So ultimately sometimes investment management के ऊपर एक चीज आ जाती है, वो है business management, और वहां पे allocations हो सकते हैं. अभी ये जो फिनोमेना है ये कभी एंड होना चाहिए क्या? डेफिनेटली, बिकॉज द रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टेल्स अस दैट इट शुड एंड एंड दिस यूफोरिया शुड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्गर होराइजंस. तो वहां पे एक्चुअली हमने क्या करना चाहिए? सो यहाँ पे वो जो वर्ड है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, विल प्ले आउट. तो यहाँ बहुत सारे लोगों को लग रहा है यार नहीं ठीक है, बिजनेसेस अच्छे हैं, और अल्टीमेटली इनकी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की री रेटिंग होते जा रही है. सो आई डोंट नो वेदर यू हैव वॉच्ड दैट पर्टिकुलर वीडियो, व्हाई मार्केट्स आर गोइंग अप. मैंने जो अपना परिमल आड़े के नाम से जो नया चैनल शुरू किया है हमने, तो वहां पे मैंने अभी लेटेस्ट वाला वीडियो वही डाला है, व्हाई मार्केट्स आर गोइंग अप. सो व्हेन 70% plus of the government bonds are trading between negative yield to 1 to 2% of yield. So at that point of time, the average P ratio of those instruments are trading at 100 to 200 P level. So 100 to 200 P levels पे अगर government bonds में पैसा रखना पड़ रहा है, so फिर ये बड़ा पैसा जो है institutional पैसा, they feel why can't I go and invest this particular money when the world class businesses are there? I know there is an earning visibility, maybe growth is not there, but compared to the government securities which are currently trading in trillions of dollars,
some portion I can go and invest into the markets, whether it is an developed market or it is an emerging market. अगर मुझे लगता है वर्ल्ड क्लास बिजनेसेस है, MNC कंपनीज है, तो why can't I go there and invest? और वही चीज अभी हो रही है. So when this particular thing is going to end, when the government securities yields will start going up, when the inflation starts going up, that time automatically these things will start looking quite expensive compared to the debt. So हमेशा याद रखना चाहिए कि डेट में क्या यील्ड मिल रही है एंड इक्विटी में क्या यील्ड मिल रही है. तो ये यील्ड का डिफरेंस जब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि ये पी रेशियो के लेवल्स बढ़ते जाएंगे, तो ऑब्वियसली यील्ड ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स विल कम डाउन. एंड जैसे जैसे यहाँ पे क्वांटिटेटिव ईजिंग अभी जो हुई है उसका टेपरिंग होना शुरू हो जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट्स विल स्टार्ट गोइंग अप. तो जब ये सीसॉ खत्म हो जाएगा या बैलेंस आउट हो जाएगा, या फिर डेट की यील्ड्स विल बी मोर देन इक्विटी यील्ड्स, that time this particular situation can happen. 8 to 9 trillion dollars of free money has been printed and उसका सप्लाई मार्केट में आ चुका है. और ये हमने कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसका जो ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक्स को सपोर्ट करने का, उसके हिसाब से ये सपोर्ट होता रहेगा. नो, आई डू नॉट थिंक सो. ये चीज जो है ये डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर मनी विल फाइंड इट्स वे एंड दैट मनी विल कम इनटू स्पेकुलेटिव एसेट्स लाइक डेवलप्ड मार्केट इकोनॉमी, डेवलप्ड मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स, इमर्जिंग स्टॉक मार्केट्स एंड इवन गोल्ड टू. तो वहां पे ये सारी चीजें प्ले आउट हो सकती है और बहुत सारा स्पेकुलेशन वहां पे भी हो सकता है. एंड दैट इज गोइंग टू एंड इट कैन कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टर्म. अगर 2008-9 में जो प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद 3-4 महीने के बाद उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग का जो प्लान बनाया, फिर पैसा आना शुरू हुआ मार्केट में, उसके बाद अराउंड 6 से 7 साल लगे उनको क्वांटिटेटिव ईजिंग को टेपरिंग करने में. तो वो चीज अब क्यों नहीं हो सकती? ये जो क्राइसिस है जिस तरीके से प्ले आउट हो रहा है, वो लग रहा है कि 2008-9 के क्राइसिस से काफी ऊपर है. सो ऑब्वियसली द सपोर्ट सिस्टम शुड आल्सो बी बिगर देन द अर्लियर क्राइसिस एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अभी भी आप देख रहे होंगे कि अभी ये जो इलेक्शन के डिबेट्स होंगे वहां पे और ज्यादा स्टिमुलस की बातें हो सकती है यूएस इकोनॉमी में. इवन फेड इज आल्सो रेडी कि अगर जरूरत पड़ती है तो विल पंप इन मोर एंड मोर मनी टू सेव द इकोनॉमी. सो ये क्लियर स्टेटमेंट्स उनके फेडरल रिजर्व के गवर्नर से भी आ रहे. सो ये सारी चीजें वी कैन नॉट डिनाई. तो ये फ्री पैसा आता रहेगा एंड दैट इज गोइंग टू इन्फ्लेट द मार्केट्स मोर एंड मोर अंटिल अनलेस कि यहाँ पे कुछ इन्फ्लेशन के नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे. क्योंकि अगर फ्री पैसा है, बहुत पैसा मार्केट में अवेलेबल है, तो नॉट ओनली मार्केट्स, इवन अदर थिंग्स विल ऑल्सो, द प्राइसेस ऑफ अदर थिंग्स विल ऑल्सो स्टार्ट गोइंग अप. जैसे कि एक सिंपल तरीके से बोलता हूं मैं आपको कि गोल्ड के प्राइसेस आप लोग बढ़ते हुए देख रहे हो. अब गोल्ड को क्या माना जाता है? गोल्ड को डॉलर का अल्टरनेट रिजर्व माना जाता है. सो अभी आप लोगों ने देखा होगा 102 का डॉलर इंडेक्स था. डॉलर इंडेक्स यानी कि अलग अलग जो करेंसीज है वर्ल्ड में, तो उसका डॉलर के साथ वेटेड इंडेक्स बनाया जाता है कि डॉलर का इक्वेशन कैसा है. डॉलर अगर स्ट्रांग है तो डॉलर इंडेक्स विल गो अप. तो वो 102 103 लेवल से अभी 93 94 के बीच में ट्रेड कर रहा है. इट मींस देयर इज अ करेक्शन ऑफ 8 to 9%. तो वो भी चीज है. तो अभी अगर डॉलर का वैल्यू कम होता जाएगा, सो ऑटोमेटिकली इसका एक दूसरा इंपैक्ट हो सकता है कि डॉलर का वैल्यू कम होने की वजह से यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है. बिकॉज द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज वगैरह वहां पे अगर इंक्रीज हो गई तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ सकते हैं वहां पे, जो नीड्स है उनके लोगों की नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स पे. तो वहां पे अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया, सो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन किल करने के लिए ऑप्शन क्या है फेडरल रिजर्व के पास? टू हाइक द इंटरेस्ट रेट्स. तो वो चीजें ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ टर्न आउट होगी. तो इसीलिए ये इक्वेशन जो है इकोनॉमिक इक्वेशन है, और ये कब प्ले आउट होगा वी डू नॉट नो, बट डेफिनेटली इट विल प्ले आउट. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट में हमें रहना है या फिर शुड वी बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. तो ये आपको डिसाइड करना है. और इसका अगर सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कुछ है आप लोगों के लिए तो वो है कांस्टेंट वेट एसेट एलोकेशन. कि हाँ, आपने आपका एसेट एलोकेशन डिजाइन करना चाहिए, कितना इक्विटी में, कितना डेट में, कितना लिक्विड में, कितना गोल्ड में, कितना रियल एस्टेट में, और वो एलोकेशन को जेन्युइनली फॉलो कीजिए एटलीस्ट क्वार्टरली या फिर एटलीस्ट हाफ ईयरली उसको रीबैलेंस कीजिए. ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा वेदर टू बाय विच एसेट एंड विच एसेट वी शुड सेल. तो वहां सारी चीजें ऑटो रीबैलेंसिंग में रखनी चाहिए एंड अल्टीमेटली यू विल अचीव योर फाइनेंशियल गोल. दैट्स व्हाट द आंसर ऑफ दिस बिग क्वेश्चन. क्वेश्चन बड़ा था इसलिए आंसर भी थोड़ा सा बड़ा हो गया. सो आई होप you people would have enjoyed this particular discussion on
why these stocks are trading at high P levels. So I hope that. नाउ जनरल स्टॉक मार्केट की डिस्कशन हो गया, अभी म्यूचुअल फंड्स पे कुछ क्वेश्चंस है, तो आई स्टार्ट टेकिंग दोज क्वेश्चंस. तो मिस्टर मोहित गुप्ता इज आस्किंग, सर शुड आई इन्वेस्ट इन गोल्ड ETF एट करंट मार्केट प्राइसेस? आई नीड फिजिकल गोल्ड आफ्टर 2 years एंड आई हैव मनी अवेलेबल टुडे. सो मिस्टर मोहित, जो हिस्ट्री बताता है जब ऐसे अनप्रेसिडेंटेड रैलीज होती है किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी में या फिर किसी मार्केट में, सो उसके बाद के जो साल रहते हैं वो म्यूटेड रहते हैं. जब आपको पान वाला बोल रहा है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, रिक्शा वाला बोल रहा है, टैक्सी वाला बोल रहा है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और घर की लेडीज तो हमेशा बोलती रहती है, वो वापस बार 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 सुनने को मिल रहा है, हर 2 दिन में सुनने को मिल रहा है. सो आई थिंक दैट इज नॉट अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन बल्क. बट एसेट एलोकेशन का कुछ पार्ट होना चाहिए क्या? डेफिनेटली आई फील कि कुछ पार्ट एसेट एलोकेशन में आपका होना चाहिए टू गोल्ड एलोकेशन, बट नॉट बिकॉज कि ये 52, 53, 54,000 पे आया है, बिकॉज एसेट एलोकेशन थ्योरी टेल्स यू कि ये डाइवर्सिफिकेशन में अलग अलग एसेट क्लासेस में आप पैसा रख सकते हो. तो वहां पे गोल्ड को भी वैसे ही आपने सोचना चाहिए. अगर डॉलर टर्म्स में देखोगे तो 2011 में $1930 पर आउंस पे था गोल्ड, जो अभी $2000 पर आउंस पे है. सो वहां पे अगर देखा जाए तो 9 साल में डॉलर टर्म्स में देयर इज हार्डली 3-4% अप्रिसिएशन. बट उसके बाद वो 1930 रुपीज से $30 से वो $1000 तक गया 2016 में, और वहां से अभी $2000 तक ऊपर आया है. उसके बीच में बहुत सारे इक्वेशंस जो चेंज हुए, वो डॉलर और रुपी इक्वेशन चेंज हुए. फ्रॉम 45 रुपीज पर डॉलर वी आर नाउ ट्रेडिंग एट 75 रुपीज पर डॉलर. तो उस वजह से रुपी टर्म में गोल्ड के प्राइसेस ऊपर चले गए. सो वहां पे ये सारी चीजें देख के ही आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कॉल्स लेने चाहिए. Some allocation to this asset class should be there, no doubt. But अगर जैसे as you are saying, I need physical gold after 2 years, so it means there is some kind of goal which you have locked to that particular investment. तो वहाँ पे I will not suggest to time the market and all those things. Just buy that particular requirement, और उस वक्त पे हाँ फिर आपको वो चाहिए ही चाहिए, तो it's better to buy. Do not speculate, because 2 साल में क्या होगा nobody knows. So now the objective should not be the returns. The objective should be to fulfill your financial goal. तो उसके हिसाब से I think you can go and do that, not from the point of view कि यहाँ पे speculation करके फिर उसमें ज़्यादा returns मिलेंगे क्या, all those things. So I will not suggest to do that. Now the next question, Mr. Chaitanya is asking, which category of debt funds are more appropriate to form the core debt portion of portfolio? Presently, I have invested into Axis and IDFC short-term debt funds. Given that almost similar average maturity and superior credit profile would be banking and PSU funds, be a better alternative. So definitely, अगर risk point of view से आप देखोगे, so banking and PSUs would be much lesser riskier compared to other short-term वगैरह debt funds. अगर आपको लगता है अभी एक चीज देखनी चाहिए, आपको लग रहा होगा कि रिटर्न्स वगैरह इनमें अच्छे दिख रहे हैं. व्हाट यू नीड टू वॉच इज व्हाट इज द यील्ड टू मैच्योरिटी एंड व्हाट इज द एक्सपेंस रेशियो. उसके बीच में व्हाट इज द यील्ड टू मैच्योरिटी एंड एक्सपेंस रेशियो वो काट के आपको जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है, तो वहां पे एवरेज मैच्योरिटी का प्रोफाइल देख लीजिए और उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए. यहाँ पे आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो बहुत मैटर करेगा. इवन when you are investing into a debt fund also, so वहां पे भी aggressiveness, moderate और conservative, ये कौन सा रिस्क प्रोफाइल है ये देखना बहुत जरूरी है, और उसके हिसाब से आपने एलोकेशंस करने चाहिए. तो समझिए, या फिर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वगैरह लग रहा है तो यू कैन स्टिक टू इवन द FDs ऑल्सो, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. बट एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रैशनल करके आपको चलना होगा. If you are allocating to very 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 quality portfolio, the expectation should not be more than 5%. That's what I feel. I strongly feel. And उस पे भी taxation का part अलग से हो सकता है. So that thing you need to keep in proper mind. Mr. Mohit is asking one more question, sir. I have no knowledge of pharma companies. Should I allocate some part of my portfolio in a good pharma mutual fund like Nippon India Pharma for next 5 years? So Mohit ji, when you don't know anything about pharma companies, so then how you will find a good pharma mutual fund? So it's better to avoid direct sector allocations when you don't have any knowledge about that particular sector. It's better to stick to a diversified kind of portfolio, जहाँ पे वो fund manager को अगर लगता है कि some allocation should be given to that particular sector, so he will take that. You should not go and take allocations like that. So that would be a genuine and strong suggestion to you from my side.
I think next question is on oil and sector. Lawrence is asking, as the oil and gas sector is hit badly due to COVID, I see an opportunity to invest in that sector. I would like to know the best options to invest in this sector, ETF, MFs or stocks. Could you please suggest ETF or mutual funds which are mostly invested into oil and gas sector? So first, I would like to tell you about oil and gas sector. I am not that positive from the earnings growth visibility on oil and gas sector. So I will avoid oil and gas sector purely from the investment point of view. हाँ, वहाँ पे कुछ अगर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, जैसे कि बीपीसीएल वगैरह हम जो देख रहे हैं, थिंग्स विच आर हैपनिंग कि भाई स्टॉक ऊपर जा सकता है, डाइवेस्टमेंट हो सकता है. सो दोज आर ऑल अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्रेडिंग गेन्स which let the fund manager take advantage of that because he is better equipped to take that decision. I will not suggest you to go directly and investing into oil and gas sector because of the earnings growth visibility is not that clear to me, and that's why I will avoid going and taking direct allocation. As a part of portfolio some allocation could be there, but not मतलब ऐसा sectoral allocation and वैसा नहीं करूँगा मैं. I will avoid directly going in there. हाँ, बट अगर नेचुरल गैस के बारे में अगर आप बोलोगे, आई थिंक वो क्वेश्चन भी है स्टॉक पे आईजीएल के बारे में, तो मैं डिस्कस करूंगा. वी आर पॉजिटिव ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ नेचुरल गैस, सीएनजी वगैरह, ये जो है एलएनजी सीएनजी, आई थिंक दैट इज वन थिंग वी आर पॉजिटिव ऑन. Mr. Ravi Ranjan is asking, sir, in the current market situation, is it good idea to redeem some mutual fund holdings and invest in direct blue chip stocks for long term, say around beyond 8 years, as I have some mutual fund units in ICICI Pru large and mid cap, invested in that before I joined your channel through some broker. तो यहाँ पे अगर आप आई थिंक यू आर पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो, तो वहाँ पे कोई एक सिलेक्ट कीजिए आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से और फिर वैसे एलोकेशंस करने चाहिए. यू कैन रिप्लेस दैट, बट वहाँ वो समझना भी जरूरी होगा कि एलोकेशंस प्रॉपरली फॉलो हो रहे या नहीं हो रहे, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल विच सम फीडबैक आई वॉज गेटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन ट्विटर ऑल्सो कि मैंने ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, आपके मॉडल पोर्टफोलियो में वो है स्टॉक. So it's not about allocating to single stock, individual stocks. It is all about the complete model portfolio. तो वहाँ पे अगर फॉलो करना है मॉडल पोर्टफोलियो को तो completely फॉलो कीजिए. So then I do not feel there is any problem to take allocation like that. No issues with that, because वहाँ पे भी in some model portfolios we have included mutual funds also. Some model portfolios are mutual fund only model portfolios also, and some are stock only. So वहाँ पे आपने किसी एक फिलॉसफी को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए. अगर आपको लगता है मॉडल पोर्टफोलियोज में आप अलग अलग गोल्स के हिसाब से मॉडल पोर्टफोलियोज डेवलप करना चाहोगे, अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, सो दैट आल्सो यू कैन डू. एंड फॉर दैट डेफिनेटली आई थिंक जो पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान है हमारी वेबसाइट पे, वेयर मिस्टर गौरव जैन टेक्स केयर ऑफ द पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग, तो वो डेफिनेटली वन शुड ट्राई टू गेट एन असिस्टेंस और हेल्प ऑन टोटल मतलब गोल रियलाइजेशन के हिसाब से आपने वहां पे आपके प्लान्स करने चाहिए. सो दैट वुड बी वेरी गुड सजेशन फॉर यू पीपल. Mr. Satya is asking, I got one of the 3 segregated portfolios from Franklin. 2 more are promised in August 2021 and December 2021. Would you suggest me to take out and redeem unsegregated portfolios? तो अगर सेग्रीगेशन वाले हैं, मतलब ये तो लॉक इन वाले फंड्स हो गए ना, उन्होंने क्लोज जो किया है, तो वहां पे तो रिडेम्पशन वैसे भी अवेलेबल नहीं है. सो यू विल हैव टू वेट टिल द मैच्योरिटी कम्स, और वो सेग्रीगेशन का क्लैरिटी जब तक नहीं आता है, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट. सो आई विल suggest you you will have to wait only. There is no other option available. So Mr. Chaitanya is asking, hi sir, I am looking for 10 years investment period for now. Following is my question for today's live session. Considering the future surprise we may have in the financial sector because of the NPAs after the moratorium period gets over, how much percentage of portfolio one should give to financial stocks like HDFC, HDFC Life, HDFC Bank, HDFC AMC, Kotak Bank, Bajaj Finance, ICICI General Insurance? Right now they have 40% of weightage of in my portfolio. Do you think it's a balanced approach? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब हम जब म्यूचुअल फंड के एनालिसिस करते हैं ऑन आवर MF यदन्या वेबसाइट, तो वहाँ पे वी ऑलवेज सजेस्ट दैट कि अगर टॉप 3 सेक्टर्स का एलोकेशन मोर देन 50% है, then it is little concentrated kind of portfolio. So when you are investing into a diversified mutual fund portfolio, at that time the concentration is high, so you are taking little more risk. और यहाँ पे when you are investing into HDFC Bank, Kotak Bank, Bajaj Finance,
So obviously these are market leaders, no doubt about that, in some or the other way. But I think next year is going to be a little tricky, so you should be careful about that. My suggestion to you would be, it's better to have a good approach on the model portfolio rather than too much of allocation to any particular sector. तो वहां पे आपने ध्यान से वो देखना चाहिए. इट इज नॉट अ बैलेंस्ड अप्रोच, इट इज लुकिंग लाइक अ कंसंट्रेटेड अप्रोच बिकॉज 40% ऑफ द पोर्टफोलियो इज इनटू these 5-6 stocks. So definitely ये बहुत ज़्यादा concentrated call है. Downside के हिसाब से अगर आप देखोगे तो obviously lot में अच्छे होने का एक benefit इन stocks को हमेशा मिलेगा compared to the other players, but still we cannot say that कि नहीं downside रहेगी ही नहीं. Obviously there are possibilities and that's why I want to say कि यहाँ जब तक ये moratorium end नहीं होता तब तक clarity नहीं रहेगी ज़्यादा. So वो जैसे ही end हो जाएगा, I think we will get a lot of clarity from this particular sector. Just a second, I'll just switch on. Yeah. Yes. So next question is Mr. Mukesh Pal is, why do you not have any chemical stocks in model portfolio, or what's your view on chemical stocks? So I think we are already working on that, and I think soon you will get those details on chemicals stocks also and sector also. So please give us some more time. We have already started working on it. Mr. Ketul Shah is asking regarding sector from the mutual fund portfolio. We are seeing good money flow investment in power sector and power equipment manufacturer in few stocks like NTPC, JSW, Tata Power, NHPC, Kalpataru Power, etc. I say them as part of lot of good MF portfolio. Could you please explain us the business model of this sector and how each stock is different? So I think उसके लिए तो Mr. Ketul, I think we will try and cover this particular sector, but as an investment, from the investment point of view, there are few stocks which are available in our model portfolios where we have taken them. Majorly PSUs है. Private तो I would like to avoid because the kind of scenario currently going on. तो power sector पे भी भले ही demand अच्छी हो, but उस I think payments के issues हो सकते हैं, and for that only 1 lakh crore rupees का support government के side से power sector को हुआ है, but वो support majorly PSU side पे ज़्यादा रहेगा. That's what I feel. So as a direct allocation to this sector, I will avoid. It's better to take this allocation through some mutual funds or model portfolios. So that would be a suggestion. But for the overall, I think जो आपने बोला है कि sector कैसे workout होता है, I'll surely ask the team to work on that. And जैसे ही, because अभी a lot of already work is pending और वहाँ पे हमें जहाँ लगता है opportunities are more, I think we are covering that. But surely I think we will be will do that particular thing also for you, for all the subscribers in coming days. Mr. Anand, I think there is a question on from a member also on chat. Is PGIM India Global Equity Fund good? I have SIPs in Parag Parikh Long Term Equity Fund, L&T Mid Cap Fund, Axis Small Cap Fund, Axis Nifty 100. Your views, please. PGIM, it's not under our radar, so I'll go and look into that. And if it's worth, we'll definitely have a review also of PGIM because it's a small fund house. AUMs are also very small, so they do not come under our radar. Baki, regarding long-term equity fund, Parag Parikh, I think it's a good fund. L&T mid-cap, since Mr. Lahiri has left L&T, so thoda sa we are not that positive. We would like to watch it for some more time. Axis small cap, the journey is looking good since the NFO, but still a lot of challenging times are there to face. So let us see. Axis Nifty 100, it's a large cap oriented index fund. So index, I think large cap में the expectation, rational expectations के साथ with a good diversification you can invest. I still feel looking at the extra I think allocation, I'll not say allocations, but एक बहुत ज़्यादा जो discussion index fund पे शुरू हुआ है उसके वजह से, और recently in last 3-4 years जो out performance large cap category को हुआ है उसके चक्कर में थोड़ा सा ये popular हुआ है सारे index funds. But I still feel there is a hope in some large cap funds which they can beat these indices. So if you are following us on our MF Yadnya platform, so there you will find out the funds which are beating the index, which are beating the index consistently, which are beating the
category average also consistently, तो definitely you should go and have a look at our MF Yadnya portal. तो वहाँ पे आपको 200 plus mutual funds के reviews every month हम करते हैं, तो वो मिलेंगे, and it will be very helpful for you people to build your portfolios also. So we'll hope that you will go and visit there. I think chemical sector, Ashok Garg is asking regarding chemical sector. So definitely, as we told you, कि soon we will be coming up with the chemical sector review also. So next, now stock specific questions we'll start taking. So there is a question on Exide Industries. How is it positioned in lithium ion battery competition? So competition is very high from global players also, and even the companies which are concentrating on electric vehicles also, they are also thinking of a permanent solution, inbuilt solution. So वहाँ पे challenges will be there, but still there is a lot of demand, which an organic demand, because of which I still feel Exide Industries and Amar Raja should do well. But only from the lithium ion battery competition and all those things, I do not feel, या फिर उनका जो पोर्शन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ वो गेम चेंजर कुछ करेंगे, वी डू नॉट थिंक. एक रैशनल कंजम्पशन स्टोरी के हिसाब से वन कैन लुक एट, नॉट फ्रॉम मल्टी बैगर काइंड ऑफ स्टोरी. आई डू नॉट थिंक इट इज पॉसिबल विद दिस. सो आई थिंक Manoj Mandal was asking about the same thing, Exide Industries. Avanti Feeds, he is asking. So Avanti Feeds, I think soon I'll do a stock analysis on Avanti Feeds. I have already started following, or that particular stock is on my radar. Few of the industry experts I'm interacting with, so they are saying that there are still a lot of uncertainties regarding the लेबर का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा अभी नज़र आ रहा है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में. तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा. बट अदरवाइज लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई स्टिल फील देयर इज अ ह्यूज अर्निंग विजिबिलिटी अवेलेबल विद दिस पर्टिकुलर कंपनी. सो वी विल श्योरली हैव अ detailed analysis on Avanti Feeds in coming days. Mr. Devendra Dhut is asking on HDFC Bank. So finally HDFC Bank questions are there. Why did Aditya Puri sold his stake or shares of HDFC Bank? वो तो मुझे पता नहीं है, because I think time will tell. There are 3 possibilities. हो सकता है वो किसी और बैंक को ज्वाइन कर रहे हैं, हो सकता है जो नेक्स्ट उनका सक्सेसर आ रहा है, he is not agreeing on that name, या फिर वो कोई प्राइवेट इक्विटी का भी को भी ज्वाइन कर सकते. तो ये बहुत सारे रीजंस वहाँ पे हो सकते हैं. वी डू नॉट नो व्हाट इज द मेन रीजन. सो आई थिंक टाइम विल टेल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड अ रिटेल इन्वेस्टर बी वरीड इन सच केस? आई डू नॉट थिंक कि एक बंदे के जाने की वजह से पूरा का पूरा बैंक को लॉस होगा एंड ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस ओरिएंटेड बैंक. एंड आई स्ट्रांगली फील कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से द प्रोसेस विल विन रादर दैन अ पर्सनैलिटी. सो उसके हिसाब से तो आई डू नॉट थिंक कि, हाँ, अगर आप बोलोगे कि ये एनपीए का अगर मेस होता है कुछ क्रिएट, तो उसकी वजह से प्रेशर आ सकता है कि एचडीएफसी बैंक पे. सो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक पे भी आ सकता है, कोटक बैंक पे भी आ सकता है, बजाज फाइनेंस पे भी आ सकता है. बट कंपेयर टू अदर बैंक्स द प्रेशर विल बी लेस. तो वहां पे ये जो देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन है, टीना फैक्टर, तो वो शायद फिर से प्ले आउट हो सकता है. एंड दैट्स व्हाई द डाउनसाइड रिस्क इज लुकिंग लिमिटेड. डाउनसाइड रिस्क इज देयर, या डेफिनेटली डाउनसाइड रिस्क इज देयर. But is it limited compared to other players? Yes, it is limited compared to other players. So ultimately, it's a market which is linked to a lot of factors. So we will have to have a close watch कि what exactly is going to happen. And that's why, as we always say, कि जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप उसकी नेक्स्ट 10-20 साल की अर्निंग्स के हिसाब से देखते हो. तो अगर इसके बीच में, मतलब आपने 20 साल के हिसाब से हर साल का 5-5 रुपये उसको दिया है स्टॉक को वैल्यू, तो अगर एक साल की उसकी अर्निंग विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, तो वो स्टॉक लॉजिकली 5 रुपये से गिरना चाहिए, नॉट बाय 40 रुपीज से. बट मार्केट्स आर नॉट दैट रैशनल. मार्केट इज अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो वहां पे अगर एक्स्ट्रा सप्लाई मार्केट में आ जाएगा तो डेफिनेटली डिमांड कम होने की वजह से स्टॉक प्राइस नीचे आएगी, बट रिकवरी विल ऑल्सो बी दैट स्ट्रांग, जो हमने ऑलरेडी मार्केट में देखा हुआ है. सो अगेन, इवन on a broader market also, it's all about next 10-20 years what kind of market we will have. तो उसमें अगर एक आध साल का अर्निंग का विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होता है, सो डेफिनेटली कि वहाँ पे लॉजिकली इट शुड गो डाउन बाय 5-10%,
बट जब 40% नीचे आ जाता है तो देन रिकवरीज आर ऑल्सो वेरी स्ट्रांग, एंड दैट टू विद करंट सिनारियो जहां पे लिक्विडिटी इन्फ्यूजन इज सो इजी फॉर दीज सेंट्रल बैंक्स. इट्स जस्ट एन अनाउंसमेंट फॉर दीज पीपल. वंस दे डू दीज अनाउंसमेंट्स वी अगेन स्टार्ट लुकिंग एट द मार्केट रैलीज. सो वो चीजें सारी, ये बहुत सारी नए रूल्स भी यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं, और हमेशा सिर्फ एक फैक्टर को नहीं देखना चाहिए, सारी चीजें देख के वी विल हैव टू टेक अ कॉल. For HDFC Bank, I still feel downside is restricted and long-term earnings growth feasibility it's still intact, because आने वाले समय में जो आज 35% प्राइवेट सेक्टर का मार्केट शेयर है इन लोन बुक, इट कैन गो टू 70% ऑल्सो इन कमिंग 5-10 years. सो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे, सो प्राइवेट सेक्टर लीडर लाइक HDFC Bank will obviously gain good market share in the total banking sector, and this scenario of COVID will do a lot of consolidation in banking sector, which will help the HDFC banks, the Kotak banks, or even the Bajaj Finance also in coming quarters. We will have to wait and watch, but short-term fluctuations are going to be there and is going to be the part of the market for the long term. That is the volatility. Now the next question, Mr. Ravi Chandra is asking, can HDFC be considered foreign company because it has majority shareholding from FIs, which is 70%? Are they entitled to profits from HDFC Bank and Life? How good is HDFC in the current market? So FIs और FDIs में बहुत डिफरेंस होता है. So FDI मतलब ऐसा कोई बल्क में आके उसमें मतलब उनकी मैनेजमेंट में उन्होंने कोई स्टेक नहीं लिया है. सो हमेशा याद रखिए, अभी रिलायंस के जियो के जो इन्वेस्टमेंट है उससे हमने क्या सीखा, उससे सीखा देयर आर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स, देयर आर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स. तो यहाँ पे FIs आर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, दोज आर नॉट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से दैट इट्स अ बैंक रूल्ड बाय फॉरेनर्स. सो नो, द मैनेजमेंट इज इंडियन, द टोटल कंपनी इज मैनेज्ड बाय प्रॉपर एंड वेरी गुड इंडियंस लाइक के मिस्ट्री और with the guidance of Mr. Deepak Parekh और HDFC Bank, Mr. Aditya Puri. तो ये बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग आके यहाँ पे प्ले आउट कर रहे. So I do not think there is, it's a foreign kind of venture. Now, are they entitled to profits from HDFC Bank and Life? Entitled means when the dividends they will start getting, obviously they are entitled for the dividends. But बाकी जो retained earnings होगी वो तो उनकी subsidiaries में ही रहेगी. Though they will always declare the consolidated results including their dividend income also. So ये चीज हमने हमेशा याद रखनी चाहिए. So entitled मतलब वहां पे उनके अकाउंट में नहीं आने वाला है. As a subsidiary, and that too listed subsidiaries, it will remain there only. But as a shareholder, they will always have a right on the management. So that is one should look at. How good is HDFC in the current market? Now the question should not be how good HDFC is in the current market. You should ask whether HDFC is good for the long-term investment horizon. So yes, HDFC is good for the long-term investment horizon. And as I told you, this moratorium period or these NPA issues could be there. So, and because of that, there could be a lot of volatility which can happen. But downside risk is protected. So that's what one should always look at. Mr. Devendra Dhut is asking, what are your views on IGL and best company to pick from gas distribution? So IGL is a good company, MGL is also a good company, Petronet, LNG is also a good company. These are all very good companies, and definitely as we promised, इस पे एक comparison का video भी आप लोगों के लिए release करेंगे. But as a sector, from the earnings growth visibility and earning visibility longevity, we feel it's a strong sector to be into, because alternate resources में this is one resource which is spreading its wings quite good. तो वहाँ पे आपने डेफिनेटली वो देखना चाहिए कि ये सेक्टर आपके पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है. वी विल कम अप विद प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस ऑल्सो ऑफ दीज कंपनीज. कुछ छोटे छोटे एनालिसिस तो हमने ऑलरेडी किए हुए इन कंपनीज पे. आई थिंक दोज पर्टिकुलर वीडियोज विल ऑल्सो गिव यू अ गुड कंफर्ट फॉर दिस सेक्टर. Overall, I think we are positive because there is an organic growth which will happen, and there is an inorganic growth. Inorganic means ये shift जो होगा from petrol and diesel to these alternate resources. I think with there natural gas will be a big beneficiary which will come out. So definitely it should be on your radar. Mr. Ajay Gupta is asking regarding Reliance Industries. जहाँ पे I think the question is majorly कि when the in one of the videos I told that when oil prices go up तो automatically उनके margins increase होते हैं, definitely, but to a certain extent. वो बहुत अगर ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे production में कुछ losses होते हैं raw material के, तो obviously it impacts their margins on downside also.
सो एक रेंज जो होती है अराउंड 50 to 70 के बीच वाली रेंज इज ऑलवेज गुड फॉर देम. उसके नीचे जब जाता है तो ऑब्वियसली मार्जिन डिक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, और ऊपर चले जाते हैं तो लॉसेस अगर होते हैं तो उसकी वजह से भी मार्जिन इंपैक्ट होते हैं. सो दैट्स व्हाई ऑयल इज अ कमोडिटी. ऑल दीज मार्जिन प्लेयर्स जो होते हैं इनके मार्जिन, तो वो हमेशा चाहते हैं कि ये रेंज बाउंड उसी रेंज में रहे. सो दैट वन शुड ऑलवेज लुक एट. सो उसका वही आंसर है. बाकी अभी अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल ये भूल जाइए रिगार्डिंग पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनरी एंड ऑल दोस थिंग्स. दो इट विल बी अ कैश काउ फॉर सम मोर इयर्स, बट नाउ द वैल्यूएशन पार्ट इज ऑल अबाउट जियो एंड रिटेल. हो सकता है वहां पे यूफोरिया अवेलेबल है, आई थिंक, बट इट विल बी देयर. आई थिंक द री रेटिंग हैज ऑलरेडी बीन डन फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज. तो ये आने वाले समय में इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच. और प्लस जब आपके रिवेन्यूज डाउन होते हैं 42% से, बट फिर भी आप प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज कर लेते हो बाय सम स्टेक सेल एंड ऑल दोस थिंग्स, दीज थिंग्स will always keep that momentum continuing. And plus there are a lot of big announcements which can come in their retail venture, so we should watch there. So though I understand there is a lot of euphoria which is happening in Reliance, particularly in their subsidiaries valuations, but I think it can continue for some more time when the strategic and financial investors are so gung-ho and the easy liquidity is always there in the market, so that this particular situation can continue for some more time. Mr. Akash Patel is asking one question. I am a big fan of index fund Motilal Oswal S&P 500 index fund with low expense ratio. Should I invest or stuck with UTI and Nifty index fund? Definitely from diversification point of view, Mr. Akash, you can go into S&P 500 index fund, but हमेशा याद रहना चाहिए कि dollar terms में last 10 years were very good for US markets and bad for Indian markets. I will not be surprised the next 10 years would be good for Indian markets in dollar terms also, because that's what the history has shown. Maybe recency bias is going against my conclusion, but let us see and wait. I would be happy also अगर वो मैं गलत भी हो जाऊँ, because ultimately diversification should be there. So आपका वो पार्ट हो सकता है, but ऐसा मत कीजिए कि उसमें डालो तो उसमें कुछ भी नहीं डालूंगा. I think diversification आपने global diversification if you are doing, so you can select both the funds. There should not be any problem. Mr. Ullas Agarwal is asking, hello, thanks Yadnya for so much help. I am mutual fund subscriber. I have personal investments also apart from mutual funds. One of the share is Interglobe Aviation. Notional loss of 10%. Should I sell or hold? It is 6% of my holding in share. If sell, can you recommend a share from any sector to replace it? Thanks, I'm somewhere in between conservative and aggressive. So Mr. Ullas, looking at your allocation to Interglobe, so definitely you have taken an aggressive call looking at the current scenario. But in coming quarters or years, I strongly feel looking at the cash position of Interglobe Aviation, they are currently the market leaders, and they will continue to have that extra market share also. They will grab some extra market share also in this particular aviation sector. So as an aggressive investor, you can allocate, but you must remember you should follow them properly. You do your due diligence and analysis properly for this one particular stock. I always suggest you that. And if you want any kind of replacement, I think model portfolio is a good solution for you. I understand, and you please follow this sector properly. As a market leader, short term there is a lot of risk available of the volatility, but long term I do not think कि सारे के सारे उड़ जाएंगे players. I think this player with a strong balance sheet and cash position, they can continue there and they can grab a lot of market share. It's not a direct advice to all you people to go and invest into Interglobe. You need to understand the risk also, because short term volatility could be little lethal also in this particular sector. So I think it depends on your risk profile, but follow this sector properly. This particular stock could be on your radar for longer horizon. Mr. Vatsal is asking about Rajesh Exports. So Vatsal, we are not that positive on specifically sectors like jewelry वगैरह जहाँ पे allocations है diamonds and all those things. I personally feel
the due diligence of this particular sector is very difficult to do, and that's why we have not included except Titan in our on our radar. Major reason because it belongs to Tata Group. So वहाँ पे due diligence थोड़ा कम भी हुआ तो चलेगा, but for these companies, Rajesh Exports and all those things, though financial ratios are looking very attractive, but institutional investors are not that gung-ho. The reason for their call also could be they are not able to do the due diligence properly, or the dynamics of this industry are very different. So that's why might be the reason the underperformance of this particular stock. Mr. Gopi is asking, sir, I'm holding Granules India stock at 283 for short term, 3 to 6 months. Gopi sir, I think I am not in a position to give you an answer for 3 to 6 months. First of all, Granules India promoters का ने अपना I think stakes pledge किया हुआ है, and that is the reason I think it's not coming under our radar. बाकी जहाँ पे pledging है promoter की वो तो avoid ही करना चाहिए, and 3 to 6 months तो I think with my limited knowledge मेरे हिसाब से मैं हमेशा गलत हो जाता हूँ 3 to 6 months में, तो it's better to avoid. आप मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए. लॉन्ग टर्म के हिसाब से फार्मा सेक्टर वैसा मतलब कुछ अलग नहीं हो रहा है वहाँ पे. आई थिंक देयर आर सम क्वेश्चंस ऑन फार्मा, तो विल टेक दैट देम आल्सो, बट देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन फार्मा सेक्टर स्टिल व्हिच इज गोइंग ऑन, because whatever contacts I have in pharma sectors, when I ask to them that the market is going gung-ho about pharma stocks, why you are not so positive on pharma stocks, so he says भाई मैं दिन रात फार्मा कंपनी में ही काम कर रहा हूँ, I know, and he is at good position, I know what exactly is going on, and why your market players are so positive on pharma sector, I don't understand, because a lot of our normal sales which are not happening because people are not going out, and तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल के जो वर्किंग है वो नॉर्मल नहीं है, ओनली एंड ओनली इट्स ऑल अबाउट कोविड. सो वो उसकी वजह से कि भाई मेडिकल ऑल दोस थिंग्स विल बी वेरी गुड, वो एक थोड़ा ज़्यादा यूफोरिया क्रिएट हुआ था, बट ही हिमसेल्फ इज नॉट दैट पॉजिटिव, एंड दैट्स व्हाई I would not like to give a call on Granules or even pharma also. बाकी अगर if fund managers feel good and you have allocations to mutual funds diversified, तो वहाँ पे आपका allocation हो सकता है, तो वहाँ पे जो opportunities available है उनके लिए trading की, तो शायद वो play out हो सकती है. I will avoid direct allocation to pharma stocks. कुछ model portfolios के part हो सकते हैं जहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी लगती है companies, looking at their earning visibility, वो हमने include किया हुआ है, but not any other specific pharma stocks we are that highly tracking. So that is the one reason you might not see कि ज़्यादा हमने analysis किए हुए, but I think सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज का analysis मिस्टर गौरव जैन ने किया था, जिनको फार्मा सेक्टर का थोड़ा ज़्यादा अच्छा पकड़ है compared to me. So I think I will ask him कि थोड़ा और ज़्यादा फार्मा सेक्टर पे आपको वो आंसर करेंगे आने वाले समय में, and I'll ask him to make few videos also on pharma sectors, because he has a very good grab on pharma sector. So you should keep asking more questions about pharma. I think he will do a few videos for you people on pharma sector. Mr. Bhanudas is asking, sir, I have invested in ICICI Bank, Axis Bank, SBI. What should I do? So be ready for a volatility. Be ready for a क्या बोलते हैं वो कौन सी राइड होती है ना ऊपर नीचे वाली, जो इमेजिका वगैरह उधर होती है. I think that ride you will enjoy for some time. Because the NPA pressure could be a little higher on these banks. Things were looking very good for these three banks before COVID. It was like कि मुझे ऐसा लग रहा था कि the profits could be, अगर तीनों banks की मिला के ऐसे 40-50 हज़ार 60 हज़ार करोड़ तक के profits हो सकते हैं, and because of them even the EPS of Sensex and Nifty will improve. But अभी I think next 12 months are going to be very tricky because of this COVID situation, because of this moratorium period, and because of that NPS could increase. तो वो सारी चीज़ें I think will be little difficult to handle in coming few quarters. So I will avoid allocations to these stocks. As I suggest, I will avoid. I'm not saying you do the same thing. Understand what exactly is happening with these banks, and that's why I always try to stick to big retail-oriented banks and with good backing and good promoters and solid management. तो उसके हिसाब से I have always taken those names. You can find those names in our model portfolios also. So I think ICICI Bank I have given the answer. I think 2-3 questions were on ICICI Bank.
हाँ, Mr. Vikas Taneja is asking, there are some stocks for which you have all star as green, like मतलब company, then industry, financials of that company, corporate governance of that company, but from valuation point of view, we say that कि यार ये red और yellow है. तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे वहां पे कि एलोकेशन कैसा लेना चाहिए. तो जो हमने मॉडल पोर्टफोलियोज में एलोकेशन दिए हैं, तो वहां पे ये सारी चीजें हम कंसिडर करके वो एलोकेशन डिसाइड करते हैं. सो अगर वहां पे और ज्यादा वैल्यूएशन बढ़ते हैं तो वी कैन डिक्रीज, जैसे कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स के साथ हुआ था. वी ऑलवेज फेल्ट दैट वाज अ गुड स्टॉक, तो दैट्स व्हाई वी इंक्लूडेड. बट जब वो 2400-2500 पे गया था तो वहां पे हमने डाउन साइज भी किया था एलोकेशन. सो दैट्स व्हाई वी टेक दोज कॉल्स. कंपनी अच्छी लगती है हमें और बाकी के पैरामीटर्स पे, बट वैल्यूएशन पैरामीटर थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है, उसके चक्कर में हम वैल्यूएशन एलोकेशन कम करते हैं. सो आई होप, आई थिंक मिस्टर विकास, यू आर पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो, तो वहाँ पे आपको वो एक्सपीरियंस आ गया होगा. सो आई थिंक मॉडल पोर्टफोलियो कुड बी अ सोल्यूशन फॉर योर क्वेरीज ऑन एलोकेशन टू दीज स्टॉक्स की कैसे और कितना एलोकेशन हमने करना चाहिए. गुजरात पेट्रोनेट, आई थिंक यस आई एग्री कि वहां पे हमने एनालिसिस किया, बट उसका वीडियो नहीं है. तो सून वी विल डू दैट एनालिसिस ऑल्सो ऑन गुजरात स्टेट. थोड़ा ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं होता, दैट इज़ द प्रॉब्लम. तो यहाँ पे इंडस्ट्री की जैसे कॉल लेना पड़ता है. सो इंडस्ट्री एनालिसिस होने के बाद what we can do is the financials of that particular company. बट वीडियो बनाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, और वो अगर नहीं मिलती है ना तो फिर हम एनालिसिस करके अल्टीमेटली उसकी रेटिंग स्टॉकोमीटर प्लस पे दे देते हैं, एंड इट हेल्प्स लॉट ऑफ पीपल. दोस्तों, ये स्टॉकोमीटर का निकला है सब्जेक्ट. सो आई शुड टेल यू कि ये जो हमारी वेबसाइट है investedna.in, उस पर 20,000 प्लस फाइनेंशियल प्लान्स लोगों ने आके वहाँ पे बनाए ऑन आवर वेबसाइट. तो वो सक्सेस आप लोगों के साथ एंजॉय करने के लिए हमने एक 20% का प्रोमो कोड भी लॉन्च किया था, जो 31 जुलाई तक था. बट बिकॉज ऑफ द गुड रेस्पॉन्स एंड लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि सर और 2-4 दिन वहाँ पे एक्सटेंड कीजिए, सो दैट वी कैन गो एंड टेक बेनिफिट ऑफ दैट. सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन अ डिसीजन टू कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर प्रोमो कोड फॉर फ्यू मोर डेज. सो डेफिनेटली यू कैन यूज दैट प्रोमो कोड. The promo code is 20MF, 20% discount on mutual fund Yadnya, 20 stock, 20% discount on Stockometer Plus, वो भी आप वेबसाइट से ले सकते हो. एंड द थर्ड वन इज 20 मॉडल, even 20% discount on our model portfolios also. And soon we will launch few more model portfolios also there for your reference. So definitely it will add a lot of value to your overall portfolios also and your knowledge also. So definitely, and soon we are going to have videos with Mrs. Manisha Jain, who is heading our model portfolios, who is doing all the research with the team. तो वहाँ पे उनको भी लाएंगे. ये जो क्वेश्चन, जो चेंजेस वो करती है, तो उनको भी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम पूछने वाले हैं. एंड बट आई एम क्वाइट श्योर दैट शी विल गिव all our answers and she will clear all our doubts, because I also have few doubts. I also consult her regarding that. So देखते हैं कि क्या क्या answers वहाँ पे मिलते हैं. I think those interactions will also you will enjoy a lot. थोड़ा background अगर दे दूँ तो Mrs. Manisha Jain was working with Morgan Stanley risk division में. She is an FRM, जो काफ़ी difficult exam होती है, and the experience also is very good. She has worked with lot of mutual fund companies for from Morgan Stanley. So she used to deal with the fund managers, the risk teams. तो वहाँ पे just background देने के हिसाब से I just thought कि I should give that background to you, कि वहाँ पे model portfolios पे पूरे सारे parameters play out करके we develop them. But follow करना है ना तो पूरी तरीके से follow कीजिए उसके. पार्शियली आपको उसमें से जो स्टॉक अच्छा लगता है वो आपने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. दैट इज नॉट राइट. तो फॉलो करना है तो पूरा फॉलो कीजिए. देन एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट्स ओवर द लॉन्गर होराइजन. सो डेफिनेटली यू शुड ट्राई आवर मॉडल पोर्टफोलियोज आल्सो. नाउ देयर इज वन क्वेश्चन ऑन चैट. Mr. Akash Patel again, monthly I am investing 15,000 all in index fund, but now I am looking for diversification. 5,000 UTI Nifty index, 5,000 Axis Blue Chip, 5,000 Parik long term equity. Is this a correct step? Yeah, I think all the three funds are good. Axis Blue Chip, concentrated large cap portfolio. UTI Nifty, I think you are sticking to Nifty index, no problem. Parik long term, I think global diversification also you are trying to do. I don't think there should be any problem. Akash, I think you can continue if you want. There should not be any problem. But dhire, I think keep following, keep watching things, and then if required, then you can take a call. बट जो रिव्यूज है वो प्रॉपरली हमेशा करनी चाहिए. वी होप दैट कि यू आर पार्ट ऑफ आवर MF Yadnya रिव्यू सब्सक्रिप्शन. सो डेफिनेटली इट विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर
overall knowledge and to your portfolio also on mutual funds. Now the next question is from Anant. Is Dmard worth investing after Reliance declaration of opening retail stores? So Mr. Anant, the unorganized sector market share in retail is close to 88%, if I am not wrong. 9% is organized retail and 3% is e-retail. So scope is huge. The market share gains from unorganized sector will be huge. And I think this traditional thing which Mr. Damani has started, it will go for long-term. Earning visibility is looking good. Though valuations are a little stretched, and that's why we have taken down the allocation in our model portfolios. But it is a stock which should be on your radar. If valuations becomes again more attractive, we will increase the allocations. But this is one stock you should keep on your radar. This should be part of your long-term portfolio. But एंट्री कब लेनी है या फिर क्या एलोकेशन रखना है उसके लिए you can go and refer our model portfolios. Definitely it will help you. Again, one more question from Anant. Why is Idea still trading at 8 plus even after Supreme Court's sternness has made clear that companies have to pay the money? So I think कुछ आशाएं अभी भी है मार्केट में कि ये कंपनी नहीं डूबेगी और ये कंपनी डूबनी भी नहीं चाहिए. आई थिंक वो आशाएं स्टॉक को मतलब वहाँ पे चढ़ा के रखती है. तो बट आई थिंक 10 के नीचे गया है स्टॉक तो रडार से तो निकल ही जाना चाहिए. आई थिंक देयर आर गुड कंपनीज, big companies like Airtel and Jio are available. Jio through Reliance Industries and retail directly, Bharti Airtel directly. So I think I'll stick to these companies. अगर आपने को पता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम है तो it's better to take out that one company from your radar and focus on where there are a lot of good companies available in the market कि जिस पे आप concentrate करके आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हो. तो I'll suggest you to do that. Next question on Shriram Transport Finance. How is this? I think the trouble could be there. As I told you that a lot of trouble on NBFCs and banks will be there. So वहाँ uncertainty है. And unless you know about some nitty-gritties of this particular company, you should not invest. तो ये risky bet हो सकती है. So in these risky times, better to stick to market leaders. Consolidation is going to happen. वहाँ पे market leaders can get more benefits. बट फिर भी अगर आपको लगता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे तो इस पे ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पे है. आई ट्राई एंड एनालाइज इट वन मोर टाइम और इस पे एक छोटा सा वीडियो 5-10 मिनट का आई मेक एंड रिलीज ऑन आवर यूट्यूब चैनल. नो प्रॉब्लम. मिस्टर प्रिंस गोयल इज आस्किंग इज एस्कॉर्ट्स गुड फॉर लॉन्ग टर्म एट करंट वैल्यूएशंस? सो सम एलोकेशन शुड बी देयर, नॉट वेरी हाई एलोकेशंस बिकॉज एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बिल्ड हो चुके हैं और इसकी वजह से स्टॉक को ऊपर लेके मतलब काफ़ी ऊपर लेके गए हैं. बट आई थिंक इन डिफ़िकल्ट टाइम्स कोई अगर सेक्टर है तो वो ट्रैक्टर सेक्टर है, वो जो काफ़ी अच्छा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है. तो उसके चक्कर में डिस्काउंटिंग भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है. स्टॉक को रडार पे रखिए. कुछ ख़राब टाइम आता है तो आई थिंक एंट्री लेवल्स मिल सकते हैं. आई अवॉइड गिविंग दीज काइंड ऑफ आंसर्स बट इट्स अ गुड कंपनी. अर्निंग विजिबिलिटी इज़ लुकिंग गुड. अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी इज़ ऑल्सो लुकिंग क्वाइट डिसेंट. तो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ इट शुड बी अ स्टॉक विच शुड बी ऑन योर रडार. देयर इज़ नो डाउट. I think there are few questions on L&T Finance, Cadila, Sun Pharma. So as Cadila and Sun Pharma, I told, I think Mr. Gaurav Jain, I'll ask him for few more videos on pharma sector. L&T Finance, I think L&T's focus is completely shifted towards IT and their core business of infrastructure. So L&T Finance, I do not know because even they are thinking of selling their L&T mutual fund business also. So I will avoid taking allocations to these stocks directly. It's better to go through our model portfolios. वहाँ पे आपको काफ़ी answers मिल सकते हैं. Now I'll take few more questions which have come. I think Mr. Gaurav Jain has sent me few questions. Okay. Shankar Avli is asking, can you please brief about Adani Green Company as it is trading on high P ratio? ये अडानी ग्रीन का है, पता नहीं यार. अडानी ग्रुप का आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू डू देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस और ड्यू डिलीजेंस. सो दैट्स व्हाई आई ट्राई एंड अवॉइड दीज सेक्टर्स. बट एक अडानी ग्रुप पे एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश मेरी साइड से मैं एक बार करता हूँ. तो वहाँ पे होपफुली मैं वो क्वेश्चन आपका ले पाऊँगा. बट जैसे ही ऐसे 300, 400, 500% की स्टॉक में रैलीज होती है ना तो आई अवॉइड दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स.
दैट टू मतलब जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी रेज होते हैं या फिर वो क्वेश्चंस का आंसर देने की कैपेसिटी हमारे पास नहीं होती, तो इट्स बेटर टू अवॉइड, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज फील. Mr. Aditya B is asking why everyone talk highly of IDFC Bank but it's not showing in their stock price. So एक वर्ड यूज करते हैं वो हमेशा जब भी वो उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं, लेगेसी लोन्स. तो IDFC लिमिटेड के जो लेगेसी लोन्स आए ना उनके पास, जो होलसेल बुक है उनकी, दैट इज द मोर मेजर ट्रबल फॉर IDFC फर्स्ट बैंक. Otherwise, Mr. V. Vaidyanathan is a gem of a person. The way he is leading the bank, the way he is building the retail book, I think it is phenomenal. But in short term, there are a lot of pain. There is a lot of pain which is going to come. That's what I feel from their wholesale book because of this COVID situation also. Even COVID situation is forcing a lot of retail loans also into NPAs. They can force. तो उसका भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. तो वही प्रॉब्लम है, लॉट में कौन सबसे स्ट्रांग है. सो लॉट में ये सबसे स्ट्रांग नहीं है तो फिर बंदा तो बढ़िया है यार, बट ओवरऑल लेगेसी लोन्स कैन स्पॉइल द गेम. दैट इज द थिंग मार्केट थिंग्स एंड दैट्स व्हाई द स्टॉक प्राइस इज गोइंग नॉट गोइंग अप, और वहाँ पे वो स्टैग्नेंट है. एज एन एग्रेसिव इन्वेस्टर वन कैन हैव सम एलोकेशन टू IDFC फर्स्ट बैंक. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट HDFC बैंक, बट हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ, नेक्स्ट HDFC बैंक ढूंढने के चक्कर में एग्जिस्टिंग HDFC बैंक जो अवेलेबल है उसको मत भूलना. That is one thing, that is the suggestion from my side to you people. I think LNT, I think most of the questions. Mr. Sandeep is asking, what is your take on SGB? The price is has been fixed at 5534. If an investor's primary focus is to beat inflation, bank FD rates, is this a good choice? So Mr. Sandeep, एक चीज हमने याद रखनी चाहिए. When you are allocating to SGB, there is a lock-in of 8 years. So in that particular lock-in, you are investing, I'm saying, don't take me otherwise, you are investing from a recency bias. Recency bias मतलब लास्ट एक साल में जो रिटर्न्स देखे गए हैं और अभी जो सिचुएशन लग रही है उसके बीच में बहुत सारे यूट्यूबर्स आर टॉकिंग अबाउट 80,000 and 1 lakh rupees on gold. I do not know whether it will happen or not because I don't know how much pain is still remaining in all over world because of this COVID. क्योंकि ये लिक्विडिटी सिचुएशन इज सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एटलीस्ट इन द शॉर्टर होराइजन. तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्काउंट हो जाती है, तो उसकी वजह से डिस्काउंटिंग के चक्कर में लास्ट 4 सालों में जो रैली हुई है गोल्ड में वो $1,000 से $2,000 तक आई है, और स्पेसिफिक मेजॉरिटी ऑफ द रैली हैज हैपेंड इन लास्ट 12 months. तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रिसेंसी बायस कैन स्पॉइल योर गेम ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो वहाँ पे SGB के जगह पे हो सकता है आपको ETFs could be a solution जहाँ पे एग्जिट की अपॉर्चुनिटीज हो, क्योंकि ये नेक्स्ट 8 years में ऐसा फेज भी आ सकता है कुछ और ज़्यादा रैली इसमें हो, बट एक लंबा समय ऐसा स्टैग्नेंसी का भी आ सकता है गोल्ड में, जो हमेशा गोल्ड ने दिखाया हुआ है ओवर द हिस्ट्री. हाँ, बट एज अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो सम एलोकेशन टू गोल्ड शुड इज अ गुड आइडिया. अगर आप क्लियर हो वहाँ पे, आई डोंट वांट टू ट्रेड, आई वांट टू हैव दैट एलोकेशन फिक्स्ड इन माय टोटल एसेट एलोकेशन, तो वहाँ पे 5-10% का एलोकेशन इनटू गोल्ड हो सकता है, जहाँ पे डेफिनेटली फ्रॉम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा 2.5% का ईयरली, तो वो एक बेनिफिशियल है. बट रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हो कि नहीं मैं फिर मार्केट में जाके बेच दूंगा एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उसके लिए आई विल अवॉइड. बट एज अ कोर पोर्टफोलियो का पार्ट वन कैन थिंक, आप ले सकते हो वहाँ पे. बट ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि टू बीट द इन्फ्लेशन एंड FD रेट और ये होता रहेगा, सो वो बहुत लॉन्ग टर्म में होके जाके होता है, not from the short term. Even in Indian markets also, when in 2011-12 33,000 तक गोल्ड गया था, उसके कंपैरिजन में अभी 55,000 है. So in last 8 years, 9 years, the returns from the 33,000 to 55,000 is around 66%. ये चीज़ भी हमने याद रखनी चाहिए कि 10 साल में 66%, तो फिर वो CAGR क्या होता है ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, अराउंड 4-5% का. तो शायद वहाँ पे आपको लगेगा अरे ये तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाया और FD रेट को भी बीट नहीं कर पाया. और हमेशा याद रखिए तब 33,000 था, आज 55,000 है, तो शायद वो कंपैरिजन सेम हो सकता है अगेन, विच इज सो. इसीलिए रिसेंसी बायस के हिसाब से एलोकेशन नहीं करना चाहिए. एज अ पार्ट ऑफ कोर पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन में वन कैन प्ले आउट दैट थिंग. Mr. Satya is asking, is it good to invest in PPF for kids? So see, normally I suggest कि लॉन्ग टर्म में डेट का एलोकेशन 15-15 साल के लिए वन क्यों करते हो आप,
बट ऐसे जब फेजेस आ जाते हैं तो लगता है यार कुछ एलोकेशन होना चाहिए. तो इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क प्रोफाइल. इफ यू आर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, I think this is going to be a good choice for you. So that is the single line explanation for you. If you are a conservative investor, it's better you can have some allocation into PPF also for long term. I think it will not harm you, and it will give you a lot of peace of mind also. In between, few years will come when the media will tell you, YouTubers like us will also tell you, देखो PPF को कैसे बीट किया इक्विटी ने handsomely by 5-6%. तो उस वक्त शायद आपको बुरा लग सकता है. फिर ऐसे फेजेस भी आ सकते हैं जहाँ पे हमारे जैसे यूट्यूबर्स या ये जो मीडिया चैनल्स है या फिर न्यूज़पेपर्स है, वो आपको समझाएंगे देखा पीपीएफ में कितना अच्छा रिटर्न मिलता है. सो दिस आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट जर्नी. सो दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन टू ऑल दीज थिंग्स. आपको लगता होगा ये कितनी बार एसेट एलोकेशन बोलता है. ये एसेट एलोकेशन ही की है आपके पोर्टफोलियो के सक्सेस का. तो वो आपने प्रॉपरली डिजाइन करके फॉलो करना चाहिए. दैट्स व्हाट आई जेन्युइनली फील. आई थिंक एक क्वेश्चन था वो, हाँ, मिस्टर गौरवजन आस्क्ड मी टू यू शुड टेक दैट. You discussed once that you have achieved financial independence. How can we achieve? What should be the steps, sir? So I think asset allocation is one discipline which you should follow. I have also followed, genuinely followed. That might be one of the reasons. Then I have done my proper financial planning. I know what kind of retirement corpus I require. और उसके लिए मुझे कब तक काम करना है and all those things. और फिर अगर सेविंग भी करनी है तो कितनी करनी है. So all those things I have done. बट आई एम अ सिंपल पर्सन, मिडिल क्लास वैल्यूज़ है पूरे. तो वहाँ पे आई डू नॉट हैव, मतलब आज भी, मतलब दो आई कैन अफोर्ड गुड कार, आई स्टिल ड्राइव अ मारुति कार और अर्टिगा कार. सो आई डोंट माइंड डूइंग दैट. तो ये सारी चीज़ें डिपेंड होती है व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, और वो एक्सपेक्टेशंस को आप कैसे मीट करोगे और उसको कैसे बीट करोगे. तो उस हिसाब से आई थिंक फाइनेंशियल टू बी अचीव दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर is कि आपने आपका पूरा फाइनेंशियल प्लान करना चाहिए. यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर योर इनफ्लोज, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर योर आउटफ्लोज, यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड राइट डाउन योर फाइनेंशियल गोल्स, हाउ मच आई नीड टू इन्वेस्ट, व्हाट इज माई एग्जैक्ट रिस्क प्रोफाइल, और उसके हिसाब से आपने एलोकेशंस करने चाहिए. वंस यू स्टार्ट डूइंग दीज कैलकुलेशंस, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं आने वाले समय में, बट स्टिल एटलीस्ट यू हैव टेकन सम डायरेक्शन. और अगर ये डायरेक्शन प्रॉपरली लिया जाएगा सो गोल अचीवमेंट भी उतना ही आसान हो जाता है. सो इट्स अ सिंपल थिंग. डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइंड आउट योर फाइनेंशियल गोल्स, analyze your risk profile, and then take actions according to your risk profiles and start investing from day one. There is nothing like कि फाइनेंशियल प्लानिंग किसने करना चाहिए, तो जिसके पास बहुत पैसा है उसने फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए. नो, फाइनेंशियल प्लानिंग एक्चुअली उसी ने करना चाहिए जिसके पास अभी रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है. बिकॉज अगर वो पता चलेगा तो ही तो पता चलेगा एलोकेशन कितना करना चाहिए और किस एसेट क्लास में करना चाहिए और किस रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करना चाहिए. तो ऑल दीज थिंग्स आर लिंक्ड टू योर रिस्क प्रोफाइल, योर इन्वेस्टमेंट प्लान, योर फाइनेंशियल प्लान. तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना मत भूलिएगा दोस्तों. यहाँ पे फिर से एक बार बोलता हूँ आपको, अगर अभी तक आपने आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है तो investindia.in को विजिट कीजिए. वहाँ पे बेसिक फाइनेंशियल प्लान तो फ्री में मिल जाएगा. उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं, आई वांट टू बी क्वाइट श्योर अबाउट माय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और मुझे कैसे अचीव करना है पूरा प्रोसेस, तो डेफिनेटली विल बी मोर देन हैप्पी कि हमारे वेबसाइट पे गोल्ड फाइनेंशियल प्लान, जहाँ पे पूरा डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं आपका, तो वो आपने डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. मिस्टर गौरवजन ही हिमसेल्फ डज दैट एंड ही लुक्स दैट कि आपने वो फॉलो भी करना चाहिए. तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको हेल्प कर सकते हैं. सो डेफिनेटली यू शुड गो एंड विजिट आवर वेबसाइट एंड डू योर गोल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, वेयर मिस्टर गौरवजन विल स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम विथ यू, एटलीस्ट 1.5 hours, and do all your financial planning calculations and tell you what kind of portfolio you should build for achieving your financial goal or for achieving your financial independence. So that is one thing you should genuinely follow. Mr. Akash Patel, one more question. I think this is the last question we are going to take. My dad has 33 lakhs rupees of MF portfolio with 90% debt MF only. He is 62 years old. Give me some suggestion for him. What is good for him? I think for him, in our model portfolio, specifically for retirees, we have developed a model portfolios. So that particular portfolio will help you a lot, Mr. Akash. Definitely you should go and have that model portfolio subscription. It will help your dad over the longer horizon how to build, because retirement is all about those
years of actual retirement, जहां पे आप रिटायर हो चुके हैं, now you have a corpus and you need to fulfill your financial needs. तो वो चीज अगर आपको चाहिए, you should go to our website investednet.in और वहां से you can subscribe to this model portfolio. It will help you a lot in managing your dad's portfolio also there. So friends, I hope कि most of the questions we have taken. आई थिंक एक दो क्वेश्चंस कुछ बोल रहे हैं कि नहीं लिए हैं, तो आई विल जस्ट चेक कौन से क्वेश्चंस रह गए हैं. मिस्टर अमूल अग्रवाल, आप एक बार आपका क्वेश्चन फिर से अगर टाइप करोगे तो आई विल जस्ट आंसर दैट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फाइंड योर क्वेश्चन. मिस्टर अमूल अग्रवाल, सो प्लीज एड्रेस माई क्वेश्चन. यस मिस्टर अमूल अग्रवाल, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन अगेन. आई विल ट्राई एंड आंसर दैट क्वेश्चन. दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन. Mr. Amul Agarwal, I'm not able to find the question. डाला क्या? Mr. Amul Agarwal, हाँ, I think आ गया है कुछ question. हाँ, so how should one invest in renewable energy sector? Is it advisable now? Do you think there is any fundamentally good companies available? So ऐसा तो कोई ट्रैक पे है नहीं हमारे रडार पे, but I think I'll ask the team to work on this. और अगर लगता है तो डेफिनेटली उसका एक एनालिसिस भी आप लोगों के लिए प्रेजेंट करेंगे. रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अभी तो एकदम से माइंड में नहीं आ रहा है. एनी स्टॉक यू हैव इन माइंड इन दिस सेक्टर, तो आई विल बी एबल टू. नहीं ठीक है, आई थिंक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे आई विल वर्क ऑन दैट थिंग. सो लेट अस सी. बट नॉर्मली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है ये सोलर एंड विंड. सो आई ट्राई एंड अवॉइड दैट बिकॉज उनके डेट टू इक्विटी रेशियोज देख के और इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज देख के आई ऑलवेज गेट वेरी बैड फीलिंग, एंड दैट्स व्हाई आई नॉर्मली अवॉइड डूइंग एनालाइजिंग दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स. सो दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि आपको. हाँ अच्छा, वन मोर क्वेश्चन. हाउ एविडेंट डू यू थिंक इज द पॉसिबिलिटी ऑफ मार्केट फॉलिंग? व्हाट कैन बी द रेंज? सो मिस्टर अमूल अग्रवाल, व्हाई मार्केट्स आर गोइंग अप, ये एक वीडियो मैंने परिमल आडे के चैनल पर डाला है, तो वो जरूर देखिएगा. I think it will give you a lot of answers और lot of scenarios कि क्यों ये हो रहा है और ये कब एंड हो सकता है. तो वो चीज़ें जब तक प्ले आउट नहीं होंगी, it is difficult for the markets to go down. That's what I feel. So दोस्तों, फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से भी आप लोग ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो. और ये जो मॉडल या हमारे जो प्रोमो कोड्स है उसको भी ट्राई कीजिएगा. 20% डिस्काउंट उस पर भी मिलेगा आपको. मैं आशा करता हूँ कि आपने ये जो परिमल आडे का भी चैनल हमने ओपन किया है उसको भी आप सब्सक्राइब करोगे. एक शो भी हमने शुरू किया है, नीरज एंड परिमल शो, मिस्टर नीरज अरोरा के साथ. इज CA फ्रॉम NCR फरीदाबाद से है वो. तो वो भी चैनल को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमें. वहाँ पे हम डिस्कशन शोज करते हैं. सो लॉट ऑफ डिस्कशंस वी डू. ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, वो भी लेते हैं. लाइव सेशंस लेते हैं. इवन वहाँ पे लोग कॉल करके भी लाइव सेशन में हमें क्वेश्चंस पूछते हैं. तो डेफिनेटली वी शुड इवन सब्सक्राइब टू दैट चैनल ऑल्सो. सो वहाँ पे एक अच्छा कोलैब हमने किया है मिस्टर नीरज अरोरा के साथ. सो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दैट पर्टिकुलर चैनल ऑल्सो. और यहाँ पे तो हमारे ऐसे वीडियोस चलते रहेंगे. तो स्टॉकोमीटर प्लस ये जो नया फीचर हमने वेबसाइट पे लॉन्च किया है उसको ज़रा एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बारे में फीडबैक भी दीजिए. बिकॉज वहाँ पे जेन्युइनली जो एक रिसर्च की सब्जेक्टिविटी होती है, नॉट फ्रॉम ओनली क्वांटिटेटिव एनालिसिस बट फ्रॉम ओवरऑल कंपनी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारे पैरामीटर्स पे हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं स्टॉक्स को. सो ज़रूर उसे भी आप ट्राई कीजिएगा ऑन आवर वेबसाइट investednet.in. सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लाइव सेशन भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा. ऐसे लाइव सेशन हर हफ्ते हम करने वाले फॉर आवर चैनल मेंबर्स, फॉर आवर स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर्स, फॉर आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर्स एंड फॉर आवर MF यदन्या सब्सक्राइबर्स. तो ज़रूर ये जो रिलेशनशिप है हमारी, ये कंटिन्यू रखेंगे और आने वाले समय में भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल सेशंस आप लोगों के साथ करते रहेंगे. तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा. तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. जय हिंद.